अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच about the love and the support you gave me from my last video and the messages I received. Thank you ever so much उसको पसंद करने के लिए। और messages, most of the parents and students messages me asking me a few questions, so I thought why not come back again and give you some answers regarding to your question. But before I start this video, I will just let you know one thing: I am not a professional, any kind of advisor or solicitor. This information, these answers is just based on a search I can do for you guys. And if you are looking to apply for a student visa or any other kind of visa, please contact proper solicitors. उनके साथ आप contact करें, उनसे advice लें और go through any kind of procedure through them. तो start करते हैं। जो सबसे ज़्यादा question मुझसे commonly पूछा गया through the parents and the students के how much money do we need to send our child abroad for the as a student, as a student how much money do I need to bring it with me. तो उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके I thought I'll just make a video, one video, so I'll try to cover all the questions in this video. Okay. There is a couple of questions regarding about Canada and Australia. I can't just tell you about those countries because I don't live there and I can't give you accurate answer about those countries. So I'm going to just talk about the UK because I'm living in this country and mostly it's Birmingham based. I can't even tell you most about Manchester or the London or any other city. लेकिन बर्मिंघम, लंदन एंड मैनचेस्टर इन सिटीज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का ही फ़र्क होगा। यहाँ it's not going to be like $1,000 difference because UK obviously, for example, something is £10,000 here, but if we talk about in Canada or Australia or America, is going to be 10,000 up or down dollars in dollars money wise. So I'm not going to talk about that, but city Birmingham, London, Manchester is going to be few hundred quids up and down, so not much difference. So how much money do we need to send our child to abroad for the student, especially from Pakistan? Because मेरे पास ज़्यादा पाकिस्तानी पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने एडवाइस मांगी है, सो I'll talk about Pakistan. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप अपने बच्चे और बच्ची को यहाँ पे भेज रहे हैं, प्लीज़ उसको हर ज़िम्मेदारी से भरी ज़िम्मा करके भेजें। उसके कंधों पे और कोई बोझ मत डालें सिवाय उसकी अपनी पढ़ाई के, ठीक है? अब आ जाते हैं हम एक किसी कोर्स की तरफ। डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज फीस आर डिफरेंट, सो आई कांट जस्ट टेल यू एग्जैक्ट फीस how much is gonna be, but if I tell you something about the course which is I can say सबसे जो एक थोड़े पैसों वाला है, that comes about 8,000 to 10,000 pound. So it depending, like I say, university to university, course to course can be 15,000 pound as well. So I'll talk about the in the middle, not too high, not too low. 15,000 pound अगर हम ये अकाउंटिंग कोर्स है या कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, वर्किंग स्किल जो होते हैं, बिजनेस वर्किंग स्किल्स स्टूडेंट कोर्सेज हैं, I'll talk about that. That's around is 15,000 or the 14,000 pound. Manchester, Birmingham, London, these are the university. So this is going to be a 1-year fee. In different countries, in UK, the undergraduate courses it's most likely is 3 years courses, but in other countries, if you talk about it like Canada, Australia or the America, they do 4 years. So पाकिस्तानी रुपीस को अगर हम 15,000 पाउंड 15,000 pound if we convert in a Pakistani rupees, that's coming about 58 to 59 lakhs. ठीक है, करेंसी ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये एक साल की फ़ीस 58-59 लाख इसके अराउंड है जो आपको एक साल के पैसे चाहिए। इसमें अकोमोडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट द यूनिवर्सिटी फ़ी।
Okay, so बर्मिंघम बेसिस एज वेल, लाइक आई सेड बिफोर, ये बर्मिंघम की एक यूनिवर्सिटी है, मैंने उसकी आपको फ़ीस बता दी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अकोमोडेशन की तरफ। Accommodation here in the UK, about three types of accommodation: private accommodation, private landlord accommodation, and the university's own accommodation. जो यूनिवर्सिटी की अपनी प्रीमिसेस के अंदर का अकोमोडेशन है वो डिफरेंट है, उसके फीस उसके चार्जेस भी डिफरेंट हैं। द प्राइवेट कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को रेंट करती हैं, रेंट देती हैं, रूम्स और हाउस और फ्लैट्स वरेवर, एंड प्राइवेट लैंडलॉर्ड, दैट्स थर्ड नंबर. If you ask me, if I'm sending my kid to abroad, I would not advise any of the parent to send your child to the private landlord accommodation. आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक तो आपका बच्चा 17, 18, 19 साल का, चलें जी लगा लें, अगर वो एक प्राइवेट लैंडलॉर्ड की जगह पे चला जाता है, वहाँ पे ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ रूममेट वो कौन बंदा या बंदी रह रहे हैं, किस एज के रह रहे हैं, बैकग्राउंड उनका क्या है, वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आई वुड एडवाइस यू फॉर द फर्स्ट ईयर एट लीस्ट send your child the university's own accommodation on जो उन्होंने ख़ुद आपको दी होती हैं। हाँ, उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होंगे इन प्राइवेट वालों से, लेकिन एटलीस्ट यू नो योर चाइल्ड इज़ अराउंड हीज़ और हर ओन एज चिल्ड्रन। स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट्स के अराउंड ही होगा। वहाँ पे ये नहीं है कि इफ़ माई चाइल्ड इज़ 18 years old एंड द रूममेट इज़ गोइंग टू बी अ 40 years old पर्सन। नो, स्टूडेंट लिविंग विद द स्टूडेंट्स। तो एटलीस्ट पहले एक साल उसको यूनिवर्सिटी की जो अपनी अकोमोडेशंस वो प्रोवाइड करते हैं उसमें भेजें। एक साल में एटलीस्ट आपका बच्चा इस कंट्री के माहौल को समझ जाएगा, बाहर आने जाने के लिए उसको जगहों की समझ आ जाएगी, काफ़ी कुछ समझ जाता है एक साल के अंदर बंदा। तो वो पहला ईयर जो है ना, वो आपके बच्चे के लिए एक सीख भी है, एक तजर्बा भी है बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। तो आई वुड एडवाइस यू टू सेंड योर चाइल्ड दे। आफ्टर दैट यू कैन, ओके, कि अब चलो उसको वहाँ का पता चल गया है, देन यू कैन डू, ओके, यू कैन गो टू द प्राइवेट वन। अच्छे भले की समझ आ जाती है, ये वो देखा जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके बाद अकोमोडेशन चार्जेस। सो अकोमोडेशन इफ़ वी कंपेयर यूनीज़ एंड द प्राइवेट वन, यहाँ पे 200-300 पाउंड का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि यूनीज़ ओन अकोमोडेशन यू कैन से अबाउट 700 to 800 pound a month, और इफ़ यू गो फॉर द प्राइवेट वन दैट्स अबाउट 500 to 600 pound. So 500 to 600 pound if we talk about it, so that means a year is going to be about 6,000 to 7,000 pound you need for your accommodation. So उधर से आ गया यूनी की फ़ीस थी 15,000 pound, yeah, और accommodation आ गया about 7,000 pound, so ये हो गया हमारा 22,000 pound. Remember, there is no food included in these fees I just told you. This is just रिहाइश एंड आपकी जो यूनी का आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी फ़ीस है। सो 22, if we convert in Pakistani rupees, that's coming about 80, तकरीबन 80 लाख। इस 80 लाख को आप एक साइड पे कर लें, आपको फर्स्ट ईयर अपने बच्चे के लिए ये 80 लाख चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चे को इतनी दूर भेज रहे हैं, अपने अपने आप से दूर कर रहे हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ जस्ट न्यू फॉर द किड, फॉर द चाइल्ड, सो प्लीज़ सपोर्ट द चाइल्ड। ये आपका 80 लाख, इसमें अभी फूड वगैरह नहीं है, उसके कोई कपड़े, उसकी कोई शॉपिंग नहीं है, उसके कोई बाहर आने जाने के ये जो चार्जेस होते हैं, बसेस एंड ट्रेन्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स नॉट इंक्लूडेड, इज जस्ट द रेंट एंड योर यूनी फी। इफ़ यू थिंक कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे जॉब कर ले,
तो एटलीस्ट जी वो अपनी फ़ीस अफ़ोर्ड कर सकता है या अपना रेंट निकाल सकता है। सो आई वुड से दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स अ बिग, बिग, बिग इम्पॉसिबल। बहुत से 100 में से 90 स्टूडेंट्स, आई इट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस because I've been seeing those kids coming to our store to ask for the work, and how they ask, it's really heartbreaking to see people begging for the jobs like that. So 90% is just looking and begging. 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको मिल जाती है, लेकिन वो भी आपको लीगली करना पड़ता है। प्लीज़ माय एडवाइस, डोंट डू एनीथिंग इलीगल, स्पेशली द स्टूडेंट्स। अगर आप ये समझते हैं कि आप छुप के यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं, स्पेशली इन द एशियन ग्रोसरी स्टोर्स एंड थिंग प्लेसेस लाइक दैट, एंड मेक मनी, यहाँ पे पुलिस बहुत फिर रही होती है, छापे भी लगते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी ऐसी छापे में पकड़े जाएं, एक तो माँ बाप की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी गई, everything is gone, and plus straight away you deport because you're doing illegal. ठीक है, so please don't do anything like that because मेरा मेरा मैं ये समझती हूँ कि once you got this stamp on your passport, deported from UK, it's very hard to go in any other country as well. तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग इलीगल। जो भी करना है प्लीज़, जो यहाँ पर लॉ, जो यहाँ का एक लॉ है जो आपको इजाज़त दे रहा है, उसकी उसकी तरीके से करें, उसकी इजाज़त से करें। और वो इजाज़त भी देता है, स्टूडेंट्स कैन वर्क हियर फॉर 20 आवर्स, नो मोर देन 20 आवर्स। और the age wise, because the wage is here is depending on the age group. So if the child is under 19, so between 18 to 19, or I think 17 to 19, the per hour rate is £7.49. So if you're working about 20 hours a week, that means you are making about £150 a week. So 150 a week, that means you make 4 weeks a month, it's £600 you're making. But still, if you're making £600, that's hardly you can afford your food and your bus fares, your train fares, things like that. There is no way you can make that much money and assume you're going to pay for your next year fee. No, it's not possible. Or you're going to pay for your accommodation. No, it's not possible. You need a support from your parents, and parents, you need to, you have to, you must have to support your child. Don't just leave him hanging on his own, because I am seeing stories and stuff like that where so many students go through these phases where they can't see anything in front of them and then commit suicide. Just recently, I just shared that story in my previous video. The students commit suicide, and since then it just hit me so hard, and I thought I have to make some videos on this topic, and I have to share some awareness, especially to the parents. Please don't do like that. Don't put burden on your child. Don't push him to the limits where he take this kind of step. Please don't do it. So back to the question. So that it was पाकिस्तानी बन जाते हैं हमारी फ़ीस के 58 to 59 लाख। उसके बाद हमारी अकोमोडेशन के बन जाते हैं तकरीबन 22 से 23 लाख। सो दैट्स मीन्स अब 80 लाख आपका एक साल का अकोमोडेशन का हो गया और यूनिवर्सिटी की फ़ीस का हो गया। एंड इफ़ यू वर्क इन हियर 20 आवर्स a week, so a month you're making £600. So alhamdulillah, you are the luckiest student फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स के तुम्हें आपको जॉब मिल गई है प्रॉपर, और आप को ये वेज यहाँ पे जो लीगल वेज रेट है वो आपको मिल रहा है £7.49. सो यू कैन अफोर्ड द फूड एंड योर बस फेयर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं IHS फीस। You must have to pay that. जैसे NHS फीस यहाँ पे होती है, यहाँ पे every student need to pay, and I think it's about £1,000 a year. So अगर आप ये £600 a month बना रहे हैं तो आप
आप इसमें से थोड़े थोड़े साइड पे अगर करते रहें तो चलें साल की एटलीस्ट IHS फीस अपनी पे कर सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं तो यहाँ पे जब ये हॉलीडे सीज़न आता है लाइक क्रिसमस, ईस्टर, दीज काइंड ऑफ पीरियड्स, फिर यहाँ यूके में ये होता है कि स्टोर्स पे जो होता है शॉर्टेज हो जाती है स्टाफ की, यू कैन अप्लाई दे plus you have these period off from unis as well, so you can do extra hours there. You are allowed only in this kind of holiday season. You are allowed to do overtime. So for example, if you're having if you're getting paid £7.40 for 1 hour the day shift, if you want to do extra shift in the night time, you might get £8 something or £9 something, so you can earn a bit extra. That extra is for your own good, but again that extra आप ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बना लेंगे आप एक महीने में? क्रिसमस अगर स्टार्ट एंड ऑफ नवंबर इफ़ यू स्टार्ट एंड बाय द जनवरी मिडल ऑफ जनवरी आप वो काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना लेंगे? मे बी 2500 or 3000, max 3500. You can't make more than that, but again you can't afford your fee to pay for the next year. So these are just a little extra income you can have on the side to pay for the food, sometime bills. If you bought a phone on a contract, you can pay the payment for that. If clothing, there is so much छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब मैं कहती हूँ इस टाइम मेरे माइंड में आ भी नहीं रही, लेकिन जब एक बंदा खुद उस प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, देन ही नोज कि यस मेरा यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कम 1 साल का आपको 80 से 90 लाख अपने बच्चे के लिए चाहिए फर्स्ट ईयर में, और अगर 3 साल का कोर्स है तो तकरीबन ये 2.5 करोड़ को तो आप जाके टच करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आज आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो कैन हेल्पफुल फॉर समबडी एल्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. And if you want to watch more videos like this, more informative video, if you want me to make more on different visas video, do let me know in the comment section below. Till then, look after yourself, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए सबा को इजाज़त दें. ऑल द पेरेंट्स प्लीज़ 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 अगेन अपने बच्चों पर बोझ मत डालें, उनको सिर्फ पढ़ने दें, और उनको और कुछ ना बोलें कि तुम पढ़ रहे हो तो तुम जॉब भी कर लो, अपना आप संभाल भी लो, अपनी फीसिस भी संभाल लो. प्लीज़ डोंट डू दैट. सपोर्ट देम इन एवरी वे. सो टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ. इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए सबा को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड बाय बाय.